हाँ सही। बेसिकली ना बहुत से लोगों के अंदर का शेफ जाग गया, पेंटर जाग गया, बहुत सारी चीजें जाग गई। अलका जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे शायद? नहीं, मेरे पास एक्चुअली ज्यादा बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो 1 साल गया है इसमें सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन एज अ DMIT तो करीब करीब ज्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि ऑनलाइन करना मुझे समझ में नहीं आता है विद द पाउडर फिंगर एंड ऑल। वो मतलब मुझे जब तक फेस टू फेस और जब तक मैं सॉफ्टवेयर पे ना लूं, बट अदर थिंग्स काफी किया है, और एवरीवन इज वर्किंग ऑनलाइन एट होम। तो नई नई चीजें हैं जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही हैं, तो बहुत सारी नई चीजें हमने एक्सप्लोर की हैं जो हमने पहले कभी भी नहीं सोचा था कि वो हो सकती है। Right, the major shift which has happened ki we were all like aliens for these online platforms. Yes. Before this corona thing happened, like before 2019, even I was not unaware about this platform called Zoom. Okay, तो पहले मतलब we were very much skeptical, but now अभी ऐसा हो गया कि now we feel this is better. Actually, it's a blessing. We can say this is the best gift to mankind. Exactly. चलो प्रणवी मैम, वेलकम, सीइंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। Okay, so there are certain few things which we would like to share. जैसा एजेंडा में मेंशन किया है। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू। कैसे हो मैम? How is your health? ठीक हूँ, all good. Great. Everything is going good now. Fantastic. चलो तो देखिए, एज शेयर्ड इन एजेंडा जो मुद्दा है कि सबसे पहले तो एक काफी लंबा गैप हो गया था। वी आर नॉट इन टच विथ ईच अदर ड्यू टू एनी डैम रीजंस। एवरीबॉडी वाज बिजी, ऑक्युपाइड, और चलो जो भी कुछ था। बट इस 1-1.5 साल के दौरान हमने काफी सारी चीजें एक्सप्लोर की है, सीखी है, इंडिविजुअली बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, एंड सेम हमारे साथ भी हुआ है। एंड to start with, I would like to just share good news with you all that we are soon coming up with a book on fingerprints and behavior. Means जो भी हम DMIT में काम करते हैं उससे रिलेटेड हमारा एक कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं सोसाइटी में, so that it can serve as a substantial resource for all fellow DMIT practitioners or fingerprint practitioners. And the entire credit of it goes to Jesna ma'am and Sunanda ma'am. These are two people who are taking all this mammoth effort. मतलब जिनका एक passion था, एक commitment था कि we should come up with it. So I would like these two beautiful ladies to comment something on it. Yes, Jesna ma'am. Namaskaram. Seriously speaking, I know it is a blessing that we have the real textbook, a textbook which was practiced long back, and that could be decoded. And I'm very happy that I have a little Ganapati, a female Ganapati this time with me, who is doing all the writing. That is my sister-in-law. She is also into research. So it gives a different perspective. Your fingerprints gives a totally different perspective of how life values can actually be taken forward. Okay. And we also have people doing internship programs with us, those people who are into medical and non-medical area like Sanskrit, languages like Sanskrit, where they are working with the philosophies from where we have taken out the human innate theory as such, a theory which has been designed on the basis of fingerprints. Okay. So what would be the change if we literally take the book and we start practicing? The biggest change would be that till now psychology has given
Till cognition, it is fine. Okay, how you think, how you reason, and how can it be handled, all those areas. But fingerprint helps us to go a little more deeper into psychology. So there is a lot of areas where, it will literally create a difference between the old school of thought, which is commonly called the DMIT, and the new school of thought, which will be called the human innate. So this new school of thought is definitely the original one, the one which has been into practice in many sectors, and the knowledge has been taken from area of Kalaripayattu. I don't know how many of you have heard it. It was a system in Kerala where they used to select people for training, be it for Vaidyam, be it for army, be it for any area. So they would check out for the fingerprints, and from there the people are selected. And that is the reason once we had all good soldiers and all good craftsmen, everybody working in respective field. And if we literally date back the whole science, there is a very interesting story. Both Ravana and Agastya Maharshi. We follow the textbook which has been provided by the Agastya Maharshi. He is the person who designed Kalari as such. Definitely father of many sciences. Father of many sciences. And this is one among them. And they used to train people according to their innate. Now, to understand the innate, your fingerprints, if decoded properly, can give you pinpoint, not like trait, not like the percentages alone, but how to take it out and how a person can think and cannot think. You can literally pinpoint it out, how the willpower is, and many details. Like, if I keep talking, I can talk for, so to be very frank, for last 1 year, the diploma has been happening, and the people who are in diploma know how big the effort is to learn it. So this book is definitely a pointer. We will have two sides, one for the common man, so that it can be taken as an indicator, like when you people are doing your work. Okay, it can be a good guide. And if you're literally into academics, you will have a different volume coming up, which is totally into academics, totally giving out the entire research area, which we have done, and it will give out, details of the fingerprints based on the research also. So that is how the book is coming out. One for, quick guidance as a dictionary you can use, and the other one will be totally academic book. Great. I hope this is enough, and let me introduce Sunanda. Actually, she is the person who is writing the whole thing. I Nanduma. just need a couple of minutes. The watchman is here. Just Done, 2 done. minutes. Fine. Run. Great. Okay. So she'll talk later, so we can continue. Fine. So Ayo, one point, sir. I just Yeah. missed out. Okay. I would thank all my, forefathers for keeping this safe. Okay. We had something like that. We have a gallery at home, and nobody was practicing it. And it's been, after hundreds of years, this thing has been taken out and decoded. So I would, at this time, I should literally thank my forefathers who have taken the effort to keep all the things safe. Thank you. thank you, Jasna ji. And like the rough draft of the book is ready. We are working on it. We are working hard on the content, because I am always ready with my critical view. These people take all the hard effort, they come up with the content, and I say, no, this is not this. The Parashuram of The layman won't understand this language. The layman won't understand this. So I have a clear objective that the book, if anybody, any layman picks it up, एक अगर common man को अगर वो नहीं समझ में आएगा, तो then our purpose is defeated, to be honest. And that is the problem the whole DMIT is facing. Whatever the little bit data information is available scattered here and there,
दे आर इन सो कॉम्प्लिकेटिव लैंग्वेजेस ना कि कोई उठा के पढ़ भी लेता है तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, और उल्टा वो दे लैंड अप इन मोर कंफ्यूजन्स। एक तो सुपरफिशियल चीजें हैं, दूसरा वो भी प्रॉपरली प्रेजेंटेड नहीं है, एंड सो इट डजंट सॉल्व एनी पर्पस विच वी आर लुकिंग फॉर। सो यू कैन से दैट ये जो किताब है, ये 12 साल का जो ना हमने जो पेन, जो एक ना धक्के खा खा के जर्नी की है, वी आर ट्राइंग टू पुट इट द थिंग्स इन अ सिंपल वे। So Sunanda ji, are you back? Would you like to share what you have experienced while drafting and writing this book? Hello, everybody. Basically, I joined the course in December. So it's been writing the book has actually been a sort of knowledge gain for me, because I get to learn a little bit deeper, because just now ma'am, she will tell a lot of things when writing the book. But as she said, I am just the Ganapati right now. my knowledge is still in the learning phase, so I'm happy to be contributing to the effort. All the effort is from all the experienced people. I'm just on the learning journey only, and very happy to be Ganapati for the moment. That's all. And for everybody's kind information, Sunanda ji is a professional content writer. So fortunately, we found a right person to write the book. Okay. चलो, तो ये था बुक के बारे में जो आप लोगों से शेयर करना था, एंड होपफुली वी माइट कम अप विद द बुक। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस इसके लिए। हाँ जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस जी, थैंक यू। Thank you. दिस इज अ Thank you, वंडरफुल थिंग Pranavi व्हिच ma'am. हैज हैपेंड, वंडरफुल थिंग व्हिच हैज हैपेंड। नहीं, Where इस बुक were you? इस बुक के बाद प्रणवी मैम आपको भी अपना एक बुक लिखना है। आई बिलीव हाँ। एवरीबॉडी शुड एटलीस्ट कम अप विद आप बुक्स, व्हाटएवर एक्सपीरियंस दे। डेफिनेटली डेफिनेटली नितिन जी बिल्कुल करेंगे। Right. So we are working on the content, so hopefully within 2-3 months everything will be fixed, na sare modification edifications okay, when everybody gets satisfied we might publish it. So hopefully within couple of months or max by Diwali we should be able to do it. Okay, so now moving ahead, like many people are aware, we had started diploma. That was a huge and bold step as far as the industry is concerned. It is not that like we are self-patting ourselves, but fine, we attempted it because nobody was doing it earlier. And I'm happy to share that we have successfully completed the first batch of the diploma program. And luckily we have few members over here present who have been in the journey of diploma, like Dr. Joby. He is a psychologist himself. So Joby sir, would you like to share your experience? What you have discovered and explored in this journey of 8 months together? Yes. Good evening to all. Nice to meet Good evening. Renuga madam after a long time. Yes. Yes. Last December we started the journey. It was a very wonderful experience. We have learned a lot of things, entirely different things, and now we are able to decode more than 90% of person, and the acknowledgement is in higher level compared to previous DMIT report, and it's considering a lot of important things and very little bit difficult to understand at the initial stage. By practice, madam made us to learn, and by continuous effort now we are able to decode that in a certain level. Still we have to do, but it was a very useful, and it was totally different approach. And fortunately we got a selfless teacher who always want to give more than what she knows. Thank you. Every knowledge, no hiding, no manipulation, direct. So that was a gift for us. Fortunately, I'm so happy to be one of the member of that first batch.
And thank you, Nidin sir. Your wonderful knowledge you shared us. Even at any time, you are ready to correct us. What are be the mistake we are doing? What are the doubts? In a proper way, since I am also critical thinker, we match more frequency. And it was a wonderful experience. I thanks once more to all the teachers and especially all our participants also. We were a Exactly. good team. We could do wonders. Sir, Thank you critic, very much. Exactly. thank you, Exactly. Joby sir. Thank you, all And of you. just to add on, Joby sir, without critical thinking, nothing can evolve. An intelligent person cannot be convinced by just myths or bluffs or the stories or the theories. And मेरा हमेशा से यही मानना रहता है कि लोग सवाल क्यों नहीं पूछते, और अगर सवाल नहीं रहेगा तो हाउ विल यू नो सर्टेन थिंग्स. अब जो मैंने जो चीजें देखी है कि बाय एंड लार्ज इन द डीएमआईटी फील्ड लोग मान बैठते हैं कुछ चीजों को. मतलब मानना आसान है, जानना बहुत मुश्किल है. ठीक है, बिकॉज मानने में क्या है कि लाइक इफ आई से समथिंग टू यू एंड इफ यू बिलीव इट, आपको उसमें कुछ एफर्ट एनर्जी नहीं लग रही, बट अगर जानना है किसी चीज को तो देयर इज अ लॉट ऑफ पेन इन्वॉल्व इन इट. यू हैव टू स्ट्रगल टू नो सर्टेन थिंग्स. तो वो जर्नी बड़ी ही स्ट्रगल वाली रहती है, इसलिए पीपल ऑफन टेंड टू चूज द इजीएस्ट पाथ. बट अगर हम जिस फील्ड में हैं जहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमन साइकोलॉजी, डिकोडिंग अ पर्सन थ्रू फिंगरप्रिंट्स, so there is absolutely no space for believing anything blindly. I always say to my people कि मेरे ऊपर भी अंधविश्वास मत करो, always challenge my thoughts. अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो you should come up with the critical argument कि सर ऐसा क्यों है, या फिर there should be a counter argument for everything, because that is the only way any secretive science has grown in this country, whether it be astrology, whether it be palmistry. तो हमें क्या लगता है कि पामिस्ट्री का जो whatever history we know, it has been prevailing since thousands years. Let's assume कि 1500 years से अगर ये exist करता है, तो कोई एक बंदे का तो theory से नहीं evolve हुआ होगा ना. There must have been counter perspectives. हो सकता है मैंने कुछ अलग चीज देखी उस लाइंस में, उस पैटर्न में, जॉबी सर कुछ और देख सकते हैं, अलका मैम कुछ और, कश्मीरा मैम कुछ और. So there has to be different perspective. When we settle down only for limited perspective, that turns out into belief, और जो कि थोड़ा खतरनाक होता है. Then the learning stops, according to me. So we should be always in pursuit of seeking rather than believing, and that's why many people in industry now treat me as a rebel, because I don't blindly follow anything. And by God's grace, whatever were my first guru in this industry, they taught me in that way only कि don't believe me, always ask me questions and always try to prove me wrong. And they were very much open कि अगर कोई चीज उनसे गलत भी हो जाती तो they were very much humble to accept it and take the right approach again. So that is how I believe everybody should approach certain things. And जैसे जॉबी सर ने बोला, द जर्नी ऑफ डिप्लोमा हमारे लिए इटसेल्फ बहुत बड़ा एक डिस्कवरी रहा है. आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज बिफोर दिस इवन वी डिडंट न्यू दैट वी हैव सच एनरिच कल्चर एंड लिटरेचर अबाउट फिंगरप्रिंट्स. बिकॉज वो इतना इग्नोर्ड है या फिर उसको कोई पढ़ता नहीं है. बट बिलीव मी, वी हैव सो इन डेप्थ इंसाइटफुल लिटरेचर्स, बुक्स एंड रिसर्च अवेलेबल ऑन फिंगरप्रिंट्स इन इंडिया itself. They might be in some regional language like संस्कृत है या तमिल है, और say any language, और मलयाली है और बंगाली है. And we discovered these things in our journey. So even we were like shocked कि we have so much things at our disposal, and 9-10 साल से हमने चीजें देखी ही नहीं. We were just like रट्टू तोता की तरह बस अपना डिस्क प्रोफाइल एंड दिस एंड दैट एंड वर्ल लूप्स ही किए जा रहे थे. उसके अंदर इतनी सारी चीजें होती है, ये हमको पता नहीं थी या फिर किसी ने बताने की कोशिश नहीं की, for whatever reason. So
एक्चुअली ये जर्नी हमारे लिए भी बहुत ही डिस्कवरी जर्नी रही एक तरीके से. वी वर एबल टू कनेक्ट with this rich heritage and what these people had done research, like say hundreds and thousands years back, and whatever they have noted down their observation, that very much applies till today. Okay, so when we read all those literatures and all those research works, then we realize that we are working on a very superficial level till now when it comes to decoding the fingerprints. Okay, so that was a life-changing journey for all of us as well. Participants से ज़्यादा हम लोगों के लिए रहा, because organizer को बड़ा चीज़ें organize करनी पड़ती, तो they learn a lot of things into this process. Right. Yes, Jason, you wish to add something? About the diploma? No, not diploma. Anything else? Okay. I just forgot. Fine. So these are the two things which we shared. Now coming to the very important thing, and before I share with you all that initiative which we have planned to start in the industry. नितिन जी, हाँ जी. नितिन जी. सर वो भी शेयर कर सकते हैं वो नए से पहले लाइब्रेरी का, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो. Exactly. हाँ. Exactly. Acha, I think Thank you. majority of people must have enrolled for library, and if not, we have taken a initiative, small initiative, by putting up the books at one place in the Google Drive, so that anybody who wishes to explore, read or learn, they can have access of the books, right? And according to the, if I'm not wrong, more than 225 people have registered for that library. I don't know how many must have read the books, to be honest, because अगर ये 20-25 लोग भी उसके ना books को read कर ले, तो they will have a different perspective about fingerprints. And we have uploaded only those books which are available either in English or Hindi, because if I upload Malayalam or any Sanskrit books, that will be difficult to decode, and you need a translator to understand those things, basically. So thank you, Bhavesh bhai, for reminding that. So, or in that also specifically the section of palmistry, if you read it, no, you will, it would be connecting with us very well. So please explore that zone. We have created a separate section for palmistry, in which all the books which are available in soft copies, digital form, PDF forms, we have managed to keep it into that section. और भी कुछ books upload होंगे as we get it from other sources. So chalo, that's it. So now today, before we move up to the next thing of sharing, like we are excited to share with you a very interesting project which we are starting very soon. But before that, I would like to ask you a simple question. सभी से जो लोग इंग्लिश में थोड़े सा वीक है, मैं उनके लिए हिंदी में भी पूछ लेता हूँ कि एज अ DMIT लर्नर, एज अ DMIT प्रैक्टिशनर, ऐसा क्या चैलेंज आपने अपनी जर्नी में फेस किया है? Please mark my words. As a learner, as a student, what challenge you have faced in this journey of DMIT as a DMIT practitioner? I hope to convince people to give their fingerprints to us. Right. Because they are not ready. They said that it is our private property. Why you want? Yeah, they are absolutely right. You are claiming their private property. In fact, my brother asked me, one of my brother. Right. Anybody else? Alka ji, Renuka ji, आप कुछ? People take it as superficial thing, like कि कुछ पुरानी चीज है या कोई वहम है, या मतलब किसी तरह का आप कुछ गलत करना चाहते हैं, या आप पुरानी तरीके में उनको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं. It is not a modern thing, not a scientific thing. तो ये एक तरह का जो लोगों में रहा है, एक फियर रहा है, या ज्यादातर जो लोग करवाते हैं और बहुत खुश भी हैं आफ्टर काउंसलिंग,
वो दूसरों को रिकमेंड नहीं करते हैं कि लोग हमें बैकवर्ड समझेंगे Okay. कि हमने ये क्या करवाया है। जी। तो उसके मतलब इवन दो वी हैव कस्टमर जो बहुत ही सेटिस्फाइड हैं, बट फिर भी वो रिकमेंड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अपनी पब्लिक इमेज उन्हें लगता है कि वो कुछ डाउन हो जाएगी। तो Right. ये डीएमआईटी का अभी तक एक रेस्पेक्ट नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए। Right. Like Leela ma'am and Alka ji, you both have shared something as a response to the product, response of people. Okay. My question was on the other side, as a student, as a learner, कोई 2 साल से है, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से है, right? तो आपको क्या challenges face हुए इस जर्नी में? Like for example, if I want to know how fingerprints work, so do I have resources at my disposal? Do I have ready-made things, ready-made books so that I can refer? मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इसमें से आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या फीलिंग्स है जो आप कुछ शेयर कर सको तो? एक्चुअली कभी-कभी फिंगरप्रिंट समझने में काफी प्रॉब्लम होती है। Exactly. कुछ फिंगरप्रिंट्स बहुत क्लोज होते हैं जिन्हें समझने में प्रॉब्लम होती है। तो कोई ऐसी रिसोर्स हैंडबुक हाथ में नहीं है जिससे कि हम वो माइन्यूट डिफरेंसेस हम समझ सकें, क्योंकि माइन्यूट डिफरेंसेस से ही काफी चेंजेस हो जाते हैं। Right. There is a message. There is a message from Pritam. Evidences related to connection of lobes and intelligences unable to know. That doesn't exist, Pritam ji. So बहुत सारे प्रिंट्स ऐसे हैं जिसमें समझ में नहीं आते कि इसको कैसे कंसिडर किया जाए। प्रीतम जी, अगर आप मंगल ग्रह पे लाइफ ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा ना। If you are searching life on Mars, it will not, you will never succeed. Like, chalo. Sir, shall I add something? Yes. Okay, Sure. Pritam, this is especially for your query. To be very frank, those even though we claim like we have been in India, this fingerprinting has been practiced for last 10-15 years. No one has taken the research area very seriously. Right. So this is one area, like okay, we ask for evidence. How many of us have literally worked to create an evidence is a question. Second thing, if we literally look into astrology, okay, astrology, if you see the base textbook of astrology is Hora Shastra, Varaha Mihira's Hora Shastra, which is a very small book. But then from India, it traveled to China, Greece, Europe, and wherever it went, it created a lot of researchers who contributed to it. So now astrology has become a science, even when you call it like, the old one or a superstitious one or something like that, you cannot question that science. And I would They like to have just, created that kind of a research. So it And I is would like- on the shoulders of every DMIT practitioner or every human innate practitioner to learn and come out with evidences. shall I Can I add add something? Okay. Yeah. Pritam ji, are you there? हाँ जी. Yes, sir. I'm there. Can अभी you hear? like हाँ, जो एक myth है ना, this is a myth. We are trying to connect lobe with fingers. Now my counter argument as a student of science. Okay, I have learned anatomy, physiology in my 11th, 12th, in my pharmaceutical graduation, everything. Can you claim that this L4 temporal lobe is only connected with emotion? There is no other function of temporal lobe. Not of us. Can you claim No, that that's what. parietal lobe only manages the body movements or fine movements or gross movements? So this is the very childish argument which DMITians are giving. That's why they are getting bashed by this psychologist and say psychiatrist or medical fraternity, to be honest. The second argument is that fingerprints is connected with the brain. You tell me, अगर आप किसी डॉक्टर के पास बैठे और ये स्टेटमेंट करते हो, कोई इंटेलिजेंट बंदे के पास बैठे हो, can you tell me which part of body is not connected to brain? Is there any part of your body which is not connected to brain? Even अगर आपके स्किन पे जो बारीक से बारीक बाल है ना, वो भी connected है brain से. If I pluck it, you will experience a. So this is a very childish argument we are giving. That's why ये लोग हमको खड़े नहीं करते.
और हमारे पास तो साइकोलॉजिस्ट भी है, डॉक्टर का भी। सर ठीक है मेरा आर्गुमेंट। तो No, sir. No. बिकॉज कभी किसी ने सवाल क्यों नहीं पूछा कि भाई बॉडी के तो सारे पार्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, फिर हम फिंगरप्रिंट की बात क्यों कर रहे हैं? फिर हम एल्बो के जो लाइंस है उसको भी रीड करके पर्सनालिटी क्यों नहीं निकाल सकते? नी के लाइंस को रीड करके पर्सनालिटी क्यों नहीं निकाल सकते? सो सी द प्रॉब्लम लाइज हियर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेन यू कैन नॉट डिफीट medical science, because modern science knows much more about brain than you people. Let's accept and face the fact. So हम लोग ना ऐसे एरिया में, जोन में एंटर कर रहे हैं जहां पर हमारे पास ही जवाब नहीं चीजों के, ठीक है? तो अब जैसे मैंने आपको 2 ही सवाल पूछ लिए तो मतलब सारा खत्म हो गया ना खेल। लाइक any DMITans claim cannot stand against this argument कि everything is connected with brain. How can you claim only of fingerprints? फिर proof देना पड़ेगा आपको, right? So that is the reason the approach is going wrong. That is the point which I am trying to make. So we need to reconstruct the approach, because science is all about facts, measurement and evidence. क्या आप ये 3 चीजें प्रोवाइड कर सकते हो क्या? Then science will always welcome you. I repeat, science is all about facts, measurement and evidence. और अगर आप ये एविडेंस दोगे कि ना हमारे पास 1000 लोगों के एक्नॉलेजमेंट है ना, जिन्होंने बड़ी हमारी तारीफ कर दी काउंसलिंग से खुश होके, सॉरी दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज एविडेंस. यू कैन डिस्कस विद एनी साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज साइकोलॉजी बोलती है कि आई कैन इन्फ्लुएंस यू ना द वे आई वांट. अगर मैं आपको बोलूं मेरी तारीफ करना है तो आप कर दोगे, ठीक है? सो मुझे लगता है कि फर्स्ट वी शुड बी स्टूडेंट ऑफ साइंस, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द फिंगरप्रिंट साइंस. एंड इट इज नथिंग लाइक दैट वी कैन नॉट, देयर आर सर्टेन थिंग्स, बहुत सारे सवाल है जिनके हमारे पास जवाब नहीं है, एंड वी आर वेरी मच एक्सेप्टिंग इट. नोवेयर ना हमको इस बात की शर्म है कि भाई हमको इसका जवाब नहीं पता है. Might be after some few years or after some time somebody else, some more intelligent people will come into it and they might show the further path, but at least we should be open to accept कि we do not know. Then only the possibility will arise कि हमको जानना है. अभी तक सब मान के बैठे हैं ना, जैसे हम मान के बैठे हैं कि lobes are connected with fingers. जानने की कोशिश करेंगे तभी पता चलेगा कि these are all myths. But these are all speculated myths. I am not saying that fingers are not connected with brain. I am just saying that everything is connected with brain. Every part of your body is connected with brain. Yes. Right? So chalo, coming back to my question again. शायद किसी ने बोला था, I am forgetting. तो मैंने want to talk. हाँ, yes. रेणु. Sorry. हाँ. It's okay. जैसे मैं 4 years से काम कर रही हूँ उसमें, बट मुझे एक चीज यहाँ पे बहुत लगती है कि फिंगरप्रिंट्स ऐसी चीज है जिसमें हमेशा वेरिएशंस दिखते हैं हमको. एक प्रिंट्स कभी एक में नहीं आता है, और कभी कभी प्रिंट्स ऐसे आ जाते हैं कि उसमें बहुत सारे प्रिंट्स मर्ज हो जाते हैं और उस चीज का कहीं कुछ लिखा नहीं है, तो उसको इंटरप्रेट कैसे करें? क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस एक अलग होता है. तो दिस इज अ चैलेंज, क्योंकि जब तक अगर वो प्रिंट हम लोग उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे इस चीज का, अगर ये प्रिंट ऐसा है तो ये चीज किस तरह से निकलेगी ये हमको नहीं पता होती, क्योंकि दैट इज अ न्यू प्रिंट फॉर अस. तो और इसका कुछ कहीं पे लिखा हुआ भी नहीं होता है ऑलमोस्ट. तो दिस इज अ चैलेंज फॉर अस. रेणुका जी, हैव यू अटेम्प्टेड, आपने कभी कोई जैसे पामिस्ट्री के बुक्स वगैरह पढ़ने का कोशिश किया है या कोशिश की है, बट अभी तक मुझे उस तरह की नहीं मिली. मतलब वही फिर वर्ल्स है, रिवर्सेस है, लूप्स है, जो जनरल है वही जनरल चीज है. यस. बट आई टेल यू, देयर आर ऐसे बहुत सारे बुक्स है जिसमें माइनर डिटेलिंग है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ बुक्स ऐसे बड़े ही ना टफ लैंग्वेजेस होती है जो समझ में नहीं आती है, और फिर लोग लेफ्ट कर देते हैं उस बुक्स को. हाँ, तो मैंने इसलिए बोला ना, हमारा जो जर्नी था डिप्लोमा का वो हमारे लिए बहुत बड़ा डिस्कवरी था, बिकॉज
हम लोगों को ये सारे ना स्क्रिप्चर्स को समझने का मौका मिला कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, एंड many the previous methodology of writing was they used to talk in a very something many times secretive signals, वो रीडर को पिक करना पड़ता था। एग्जैक्टली। तो अगर हम इन चीजों को प्रॉपरली ट्रांसलेट करके सिंपल लैंग्वेज में प्रोपोगेट कर सके तो दैट विल सॉल्व एटलीस्ट 50% प्रॉब्लम। आई एम नॉट टेलिंग इट विल सॉल्व 100% प्रॉब्लम, बट 50% प्रॉब्लम। बट वही है कि जैसे हमारे बेसिक्स सबसे पहले हिले हुए हैं, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट एनीथिंग विद ना क्रिस क्रॉस कनेक्शंस, तो वहां पर डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट्स है। एंड साइंस जैसे मैंने बोला ऑलवेज डिमांड्स प्रूफ्स एविडेंसेस, हाउ कैन यू मेजर दिस, हाउ कैन यू प्रूव योर मेजरमेंट्स, दिस एंड दैट। तो वहां पर थोड़ा सा फिर डीएमआईटियंस की जमीन हिलने लगती है, बिकॉज उन्होंने भी स्टडी किया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, सो दैट्स इट। और कुछ कोई बोल रहा था? Shall I add something, sir? Yeah. Okay, Renuka, like in mathematics, okay, we start from the basic 1, 2, 3, 4. Okay, same way, fingerprint also has certain basics. If you are very thorough with the basic things, then even if you get the combinations, like any major combination, you will be able to decode it. So Yes. once that basic area is where we have not been given any exposure till now. But whatever is happening in the diploma, it starts from the very basic. How to see a fingerprint. Okay. So those people who have done their diploma, they know how intense any pattern can be and how they can decode it. So those basics have to be learned. सी देखो, जो मैंने आइडेंटिफाई किया है मेरे 11 इयर्स की जर्नी में कि वी आर स्टक्ड अप इन नोमेनक्लेचर। एग्जैक्टली। वर्ल इम्प्लोडिंग है, लूप पिकॉक है, फॉलिंग लूप है, फला है, डिमका है। These are all classifications. What if I name that pattern XYZ, or if I name it after my name? What is the difference it is going to make until and unless we don't understand the implications of it? Okay. तो अगर डिजाइन को रीड करना है तो यू नीड टू गो टू द रूट्स ऑफ palmistry. That is the point which I was trying to make, because dermatoglyphics में you will never find any books, proper books or proper references wherein they are connecting prints or fingers with behavior traits. Okay. Right. And Kashmira ji, I think you had asked me question, I think if you remember ki we had a discussion on it on the WhatsApp, right. So many people used to question me कि बाबा इसके ये कहाँ से connection निकाला, कहाँ, because dermatoglyphics में literally will not find anything, but definitely we have taken certain things from dermatoglyphics. Yeah. That cannot be ruled out. Okay. So DMITians को clarity होनी चाहिए कि कहाँ से क्या चीजों का connection है. So like अलका मैम has shared कि जो भी है डाटा अवेलेबल सुपरफिशियल है, अगर हमको किसी उसके और गहराई में जानना है तो चीजें का दिक्कत है. Anybody else would like to share the experience? Bhaskar sir या कश्मीरा जी? Yes sir. हाँ. Yes sir, I am waiting for my line. Please sir. Sir, जी. first of all, I am very thankful to you giving opportunity to say about a few words about your in the diploma in DMIT, and introducing this diploma course is very good, sir, and thank you very much. And also, especially many thanks and congratulations, Jasna madam. What you are taught in a different way, the dermatoglyphics, the fingerprints, I learned many things. And I have not put several questions in the class, but I learned what you have said, and the same thing I am practicing in that, that those who are taking the fingerprint, giving the fingerprints, I am applying that theory, what you have said. But it is really true, what you have said, everything I experienced. And Blessed, sir. And one more thing, since the beginning, when I have taken this franchise in different 3 or 4 companies, I lost much amount. But here,
After taking the franchise, what I learned, I don't want to depend on that franchisee and their reports. I want to see the fingerprints. I want to guide by seeing only the fingerprints to the client. That is my aim. So now I'm able to do counseling with just seeing the fingerprints only. I don't want to depend upon the reports. That I learned, madam, from you. I'm very thankful to you. Good, great. Yes, Thank you, sir. software is the biggest scam in our industry. And Moreover, and in the first batch, all our colleagues are very excellent, and their experience and they are well cooperated. And, All research people we have. sir, I think one more is left over in our diploma course. We have to submit one research papers also. Yes, sir. Yes. So that I think that one is the leftover. We'll talk about it, Bhaskar, sir. I'm giving 1-to-1. Yeah, yes, madam. And my okay, one more, madam. My request, you please share your valuable knowledge to us. Definitely. Those who are interested to take one-to-one also, you please give 1-to-1, and also charge whatever you feel free also. No, madam, don't give free. Don't give free. You have much knowledge. You are an ocean in fingerprints, regarding the fingerprints structure and their characteristics. You have the much knowledge. Even I am not possible to learn many things what you taught also, but I am requesting to all the participants, those who need regarding the fingerprints characteristics, 1-to-1 learn. It is my practical experience I am telling that Jasna Madam having much knowledge in this fingerprints subject. Thank you, sir. I will, sir, any kind of doubt actually, Joby and, Nanda and all, they keep calling, and even Faisa, whoever it is. So it is always open, sir. Whenever you feel like, you are stuck, Yeah, madam, you can put a message to me and we'll definitely talk. Anytime you are asking questions, you are giving reply. And money matters, so that goes with Nitin, sir, only. I don't know how to handle it. No, madam, this is my idea, only I'm telling. But, madam, you have got more knowledge in the fingerprints, Cat6. Sir Bhaskar, sir, we have a solution for it. So just wait for 5 minutes. We will be discussing. Okay. Yes. Okay. And nobody sir, needs to anyway, invest thank you so very much, huge sir. amount. And nobody needs to invest so huge Exactly. amount. Okay. Sir, please, that book should be released early, sir. Yes. Sir, we are Definitely, working on it. We are working on it. We are working on it. No, we have good Parashuram. He keeps editing it, sir. Okay, sir. Thank you very much. That's all fine. Thank you. To add more, it's a good combo. Nitinji and Jasnaji. One is identification and being a pharmaceutical person. Another one is thorough with our Indian mythology and Indian scriptures and Upanishads. So it's a good combination, and she's an authority as far as I'm concerned. I have heard her. So it's amazing knowledge, and your retention capacity also is very good. Very authoritatively, you can argumentatively, you can present. So that much Bandagaram, the treasury is there of knowledge. So our job is to expand this awareness to many people. So let them more people join for the course, and that kind of community we have to build it, so that unknowingly this will spread. And the more knowledgeable person also will be joining. So their professional talents are different. So that way we can take this knowledge out to the society and reach more and more people. Yes, Thank you. So our job will be very easy then. Leelamma, Joby was literally laughing when you were talking about my retaining capacity. Maybe the other Maravi may be there. Memory loss will be there. That is because you are too much of pressure. Okay, that is a sensorial memory loss. Okay, I will we'll move ahead because we have now limited time. See, I will share a very quick and important thing with you all. Why ask मैंने वो सवाल क्यों पूछा कि आपको अपने DMIT के learning journey में क्या challenges face हुए. I will share a small incident. I was in Kerala in the month of February, and accidentally, while we were driving by car, we accidentally met a person. He was Ayurvedic doctor. Okay,
And to my surprise, Vaidya. he was Vaidya. To my surprise, when we started discussion with him, to my surprise, he knew about fingerprints. He was applying fingerprint science to treat his patients. Okay. So we sat in a temple roadside and I started discussion, asking certain questions. So he shared me how he uses fingerprints to cure, means he is treating patient personality depending on their personalities. Okay. Then I threw him an inevitable question which we all DMITians face, कि कहाँ पर इसके resources हमको मिलेंगे, ठीक है? कहाँ पर ये किताबें छुपी है, कहाँ पे ये ज्ञान है? तो उसने एक ही लाइन मुझे बोला, that strike me like anything. उसने मुझे एक ही लाइन बोला कि नितिन जी, अगर आपको सोर्स नहीं मिल रहा है तो why don't you yourself become a source? Okay. And that was a point which changed me that time, कि मुझे लगा सही तो यार मैं बेफिजूल में इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, why cannot we ourselves be the source first of all? So from that point something started happening at the back of my mind, कि अभी जैसे सारे लोग परेशान हैं कि इसके प्रॉपर, अभी जैसे फॉर एग्जांपल जॉबी सर मस्ट हैव डन 100 काउंसलिंग, अलका मैम मस्ट हैव डन 500, रेणुका जी मस्ट हैव डन 1000. Everybody is having their own bit of experience. Okay. And the experience may differ case to case, right? So फिर मेरे दिमाग में ये चीज आई कि क्या हम एक ऐसा कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहां पर ओपन स्टडी एंड ओपन लर्निंग क्यों नहीं हो सकता, वेयर एवरीबडी कैन बी बेनिफिटेड बाय ईच अदर्स एक्सपीरियंस, ईच अदर्स पर्सपेक्टिव, ईच अदर्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर पर्सपेक्टिव्स. ओके. तो I shared these things with my teammates and they felt that this is the fantastic idea and which will help and it may solve a problem to a larger extent, कि जहाँ पर हम लोग हमेशा अकेले अकेले काम कर रहे हैं तो हमारा ग्रोथ शायद उतना नहीं हो सकता, लेकिन हम दूसरों के भी एक्सपीरियंस से सीखे तो शायद हम बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं. So I'm sure we are coming up with a community platform. I'm sharing a flyer with you all people. Okay. I will be surely taking your feedback over it. So, is it visible to everybody? Yes. Yes, yes. So we are coming up with the MIDAS forum. Like the MIDAS stands for Multiple Intelligence and Dermatographics Assessment Systems. So now why there is need for forum, as we have all discussed in last almost 40-45 minutes, कि बहुत सारी चीजें scattered है, knowledge is scattered, properly presented नहीं है. Everybody has their own experience, so why not to connect all these dots at a one place and everybody be benefited out of it. Okay. So we propose an open study platform in research learning for DMITians. अब जैसे रेणुका जी ने बोला कि फिंगरप्रिंट समझ नहीं आते, तो we need to understand modern approach as well as the scriptures, what the scriptures are telling about fingerprints. So that has to be addressed. Resource books and research paper discussions, case studies, knowledge sharing, cross learnings. We will surely be having psychologists, medicos or educationists as the part of the community. Brainstorming, which I always like, always question the things, question everything. Then only you will understand certain things. And there can be many other things planned, like we can always invite certain speakers who are specialized on certain topics, like learning disability, autism, etc., so that the entire forum can be benefited. So how the forum will function, we will have around 90 to 120 minutes session every week on a specific day, 4 sessions in a month that will be conducted online. And the investment is just 300 rupees per month. Okay, that is a peanut amount. Now आपके मन में सवाल आ सकता था कि 300 क्यों रखा, फ्री क्यों नहीं रखा, या कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकता सिर्फ 300 इतना कम क्यों रखा. So what we believe कि anything if done for free, that doesn't get value.
and if anything is overpriced, then people cannot afford it. अगर ये सब तक masses तक हम सारी DMITs को connect करना चाहते हैं, तो we need to have a very lucrative ticket size. और no doubt ये जो भी funds हम जमा करेंगे, that will be again invested in research, because there are so many things which needs money, like purchasing books or translating it. The translations and everything takes a cost. So whatever research we do, that will be shared within the community so that everybody can be benefited. So this is a simple approach which we are coming with in the name of Midas Forum. If anybody has any questions or queries about this forum, they can ask. किसी को सर समझ मेरा एक सजेशन है कि इसको मंथली करने के बजाय या लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो ज्यादा बेटर होगा. हाँ, this is long term only. Means like for example, this session will be a continuous process. Okay. Means I'm not getting your point, Komal ji. What you're trying to say? The way you have charged the membership is monthly. So I understand to make it affordable, you might have thought that, but from a long-term perspective, if there is a way by which you encourage yearly membership, then it is be much more better for everybody, and those who miss the live can always look at the recording. Yes, yes. Like I have mentioned in its the flyer itself, the video recordings of every session will be provided. But that doesn't mean that you should not actively participate, because cricket match देखने में और cricket खेलने में बहुत बड़ा difference होता है. If you are participating, you are experiencing a altogether different thrill. But अगर आप उसका video recording देखते हो तो उसमें शायद हो सकता है अगर आपके मन में कुछ सवाल आता है तो आप video से तो नहीं पूछ सकते, right? So you have to participate. And I get your point. And to be honest, this community, this entire project should be driven by the people. अगर majority people feel कि okay, we are ready to invest for 1 year, we don't have problem. Means let the people decide, in spite of me or Jasna ma'am or any single person deciding. Let the people decide how they want to take the things further. But agenda will be fixed कि हमको ये सारी चीजें उसके अंदर continuous mode में, that is called continuous learning में हमको imbibe करनी है. Because there are so many things, so many myths which are being speculated in the industry, which doesn't have any stand, which doesn't have any ground, and those myths needs to be addressed, to be honest. तो सबसे पहले तो हमको ground work करना पड़ेगा. Then step by step we'll go on, like we will be discussing about fingerprints, we'll be reading out books. Like अभी एक चीज मैंने देखी है कि people want to learn but they are not good readers, and I am one of them. Okay, so and I found a solution of it. I joined a book reading club last year, and it was online. Okay, so I realized कि if a book is read between say 10, 20, 50 set of people, everybody's interpretation may vary little bit, but the जो जिस निकल के आता है, I am able to grasp it properly. So instead of like for example, अगर मैं शोले का स्क्रिप्ट पढूं तो मुझे 3 घंटे लगेंगे, but मैं मूवी देख लूं 3 घंटे की तो I might absorb, my brain might absorb the story very well. So if Sir, you must be an auditory learner, no? no. I'm a discovery learner. Discovery and visual, you can say that. So somebody can be a very good speaker. Can be. So मुझे actually interactive learning ज़्यादा पसंद है, where I can raise questions. ठीक है? And अगर सवाल मन में नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका brain engage नहीं है वहाँ पर. मिस वही है कि आप बिलीफ सिस्टम में जा रहे हो, आप जानने का कोशिश नहीं कर रहे हो, वही मानने वाले सिस्टम में अटक गए हो. तो हमारा काम मानना नहीं, हमारा काम जानना है, और ये जर्नी जानने की है. और इसीलिए मिडास फोरम है कि वेयर वी ऑल टुगेदर विल बी इन द प्रोसेस ऑफ सीकिंग सर्टेन थिंग्स. अभी आई थिंक मेरे मित्र हरि जी आप हो गए यहाँ पर? I think he left.
He left. Yesterday, my friend Hari Prasad Kale, he is also a fantastic researcher and working in this field since so many years. So we were having discussion on this Midas forum. So he raised a valid point कि सर अगर सब लोग अपनी राय दे देंगे तो लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे क्या? ठीक है, तो मैंने कहा हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका। तो मैंने उसको बोला आई हैव अ काउंटर नैरेटिव टू इट. Why should people learn only one perspective? Why cannot people see 10 perspective and then they decide and they choose which perspective to accept? Like if Nitin Sabu, if somebody else is saying like we have been taught that double loops are confused patterns. किसी एक बंदे का perspective है वो. And believe me, if you study 100 patterns, 100 people having double loops, your belief will fail. Every double loop is not confused in life. Okay, they have a different set of approach towards things, towards execution. तो एक बंदे ने बोला कंफ्यूज है, दूसरा बंदा बोल सकता है कि वो क्रॉस चेकिंग कर सकता है, तीसरा बंदा कुछ बोल सकता है. व्हाई कैन नॉट वी हैव 10 पर्सपेक्टिव्स? हमारे डीएमआईटी इंडस्ट्री का बैंड ही इसलिए बजा है कि हम एक ही पर्सपेक्टिव पे चलते गए हैं. किसी इंसान ने 15 साल पहले डीएमआईटी का और पामिस्ट्री का कॉम्बिनेशन फ्यूजन करके एक सॉफ्टवेयर बना दिया और उसने अपना एक थ्योरी दे दिया जिसमें वही थ्योरी चला आ रहा है 15 साल से, like disk profiling, bird, eagle, owl. Why we need this bird profiling? We are humans. Why we need to correlate with animals? So ये सवाल क्यों नहीं हम उठाते हैं? And why can be there limited perspective of only 4 personalities? क्या दुनिया की 800 करोड़ जनता सिर्फ 4 कैटेगरी में ही डिवाइड की जा सकती है क्या? Means 200 crores will be dove, 200 crores will be eagle, 200 crores will be this, that. This is stupidity. Means even psychological community has debarred that thought process of disk profiling, and even MI theory is not being accepted by all the fraternity or all the community of psychologists. There are some critical opposition to it as well. So we need to be critical in order to be scientific, because science pursue करना पसंद करता है rather than believe करना किसी चीज पे. We can believe on religions. Somebody can believe in Allah, I can believe in Krishna, anybody can really believe in Jesus. That is belief. But क्या हम जानते हैं क्या भगवान को? That is the question we should ask. Right? Believing is easy and seeking is very tough and different. So thank you, Komalji, for sharing your point. Once we start the things, let the people decide. Let it be the voice of the people, how they want to take it. And slowly and steadily we'll evolve this platform as well. There will be many ideas, many demands, many things people will wish to discuss over it. So slowly and steadily we'll get mature in it. Right? Thank you. Anything else? Any other suggestion? Most welcome, Ji. क्या बात है, सब शांत हो गए एकदम से? तो पहले 2-3 महीने ये चलेगा, फिर हमें समझ में आएगा, फिर हम सजेशन दे सकेंगे. हाँ, नहीं चलो. Great. But this approach is just we are not trying to form a solution for the problems which are prevailing in a DMIT industry, wherein people are running and they are not getting resources. People want to know, people want to learn, but again they don't know which way to approach and where to go and all these things. So why don't we ourselves become the resources? Alka ji can be a resource, Renuka can be a resource, Komal ji can, because चलो ठीक है हमको फिंगरप्रिंट का ज्ञान नहीं, बट लाइफ का एक्सपीरियंस तो सबको है, एंड आफ्टर ऑल वी आर डीलिंग विद मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल. सो लाइक फॉर एग्जांपल हो सकता है कोमल जी ने कोई ऐसा क्लाइंट हैंडल किया हो जो केस स्टडी शायद किसी और के बहुत काम आ सकता है. द सेम केस सम अदर पर्सन माइट एनकाउंटर such situations which may match that case. So that is the pure motive behind it. So this is the thing from our side, and these things will be shared with you on WhatsApp also. Sure. And so this is it from my side. If anybody wants to add anything from their side, they are most welcome. Vashish sir, are you there? GK sir,
GK Vashisht sir, Suyash ji, सारे लॉग इन करके शायद साइड में कर देते हैं। चलो Kashmira ji, what's your view about it? No, it is Yes. a fantastic initiative, and we means there are 6 of our friends who have already started this active readers group. We are Swapna ji and Preetam and me. We 3 are there, Wow. and there are 3 more. So we keep on reading something and discuss some case studies or try to, and even we had called 2 experts also who were not from dermatographic but from other forum, so that how we can learn something different which is not related to dermatographic but just for our learning, and try to see that how we can implement few ideas or few therapies with our clients. So like if I may ask Kashmira ji, whatever the reading club you have started, what sort of topics do you read there? No, the topics basically were of dermatographics only, Okay. but the experts which I am talking about, they were not of dermatographics, they were some other experts. Definitely. The experts can be from psychological background or some other therapy background. That they can be anything, no? Or from parenting side, anything. Because everything at the end of the day boils down to human mind, because we are dealing with human innate, human behavior, human intelligence. तो जहाँ पर भी इंसान है वहाँ पर इंटेलिजेंस है, और जहाँ पर भी इंटेलिजेंस है वहाँ पे प्रॉब्लम है. Okay. Right. Basically, what happens, even I am a person who like to do research but doesn't like to read. So I and you, Nitin ji, we are on the same level. So we need some push. और कोई ऐसा मतलब ग्रुप होता है तो फिर हम लोग ऑटोमेटिकली मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए. नहीं, we are lucky na, we have like bookworms like Sunanda ji, Jesna ma'am, Bhaskar sir, they are like intensive readers. मतलब मुझे लगता है एक बिना कुछ 8-10 पेजेस पढ़े they cannot sleep. भास्कर जी की वजह से ही हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ है, बिकॉज भास्कर जी ने इतना नॉलेज शेयर किया ना बुक्स का, तो हमें ऐसा लगा कि इतना अच्छा नॉलेज है और हम लोग अगर उसको यूटिलाइज ना करें तो ये कैसा चलेगा. Exactly. नहीं, Thank you very much, madam. Kashmira ji. Like जैसे भास्कर जी एक Thanks to resource. you, and it's our privilege, Bhaskar ji, that we have some voracious readers like you who share and their knowledge selflessly, I must say. So thank you so much. Yes, I agree with you, Kashmira. True, absolutely true. Kashmir, this Bhaskar sir, he has always encouraged us, and he has provided with so much of information that we started feeling guilty that he is providing and we are not using it. Out of that guilt, we have actually started reading. But that was a really good thing. Bhaskar sir is very resourceful. You ask him any book, he will produce it. He'll buy also. He has no issues buying it. Yeah. Selflessly. That was very true. Providing. Yes. Please read. Recently, I just shared the 30 pages. Yes, Swapna ने जो बोला एकदम. Sir, you were saying something? Just recently, I shared 30-page booklet. It's a very good material is given, madam. In that, what you are taught, it is there. Yes. Yeah. That is interesting. That's I shared. That's why I purchased the book and I shared the 30 pages. What is the name of the book, sir? That is the name of the book is The Hands, written by Hoffman. And that is the only chapters which talks about. No. There are so many other there. I just took only dermatological part. Hana, I'm asking ki in that book only which talks about fingerprints, you have posted, scanned and posted that, na? Rest of the thing they are talking about hands, textures, nails, everything. Remaining are palmistry. Remaining palmistry. That's great. And one thing, if you have noticed, they are not telling it dermatoglyphics. They are using the word dermaglyph. T is missing in that. Dermaglyph. Yeah, sir. This book is written in the year of 90. Not now. It is not a old book. This is. So that was a striking, interesting thing which I noticed in that heading, basically. This is also not available here, sir, in India. It took 1 month to come from that USA, that book. Acha.
That was the Hello. time, like, you know, sir, these people used to come to India, be in many of our ashrams and sit and learn. And that was the time we were always, like, you know, behind untouchability and whatnot. So those people who came, they literally picked up whatever they wanted and they just left. नहीं इसलिए तो बोलते हैं गोरे लोग बड़े Even होशियार them, होते हैं. we should thank them. We should thank them for the effort they have made. Whether you know, we contributed, like what we say, okay, Agastya Mahashaya Nama. Even when they are not saying it, they have reproduced it the way they could. So we should be thankful for them. Right. Coming Wednesday also, I'm sharing one more book. Sure, Great, sure. great, sir. Hello, anybody else would like to share? हेलो. Yes, Ravindra bhai. हाँ, अरे नितिन जी, मैं ट्रैवलिंग में था, अभी थोड़ा फ्री हुआ. अरे हम भी इंतजार कर रहे हैं आपकी आवाज सुनने के. अभी मैंने सुना स्टार्टिंग में आप जो बोले ना, कि मुझे फिर मैंने थोड़ा एनालाइज किया कि अरे आपने जो बोला ना एकदम सही बोला, और मुझे मतलब छू गया कि हम जो फिक्स बिलीफ सिस्टम में होते, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि अरे मैं भी उसी में फंस गया हूँ. तो अभी जो आपका सेकंड बैच है ना, उसमें मैं जरूर आऊंगा. और ये एक अच्छा इनिशिएटिव जो आपने लिया ना, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना, मैं ये जो टेक्निकल चीज है ना, वो मतलब आप नितिन जी तो मुझे जानते हैं कि मैं सेल्स मार्केटिंग उसको ज्यादा मुझे पसंद है वो करना. आप लेके आओ चीजें, मैं उसको सेल करूंगा, कुछ मार्केटिंग भी लेकर रविंद्र भाई बेच डालेंगे उसको. तो वो मुझे अच्छा लगता है. तो ये बहुत अच्छा होगा मेरे लिए कि एटलीस्ट आई विल अंडरस्टैंड ऑल द टेक्निकल थिंग्स. और ये भी इनिशिएटिव आपका अच्छा है कि आप ये मंथली जो रखा आपने, तो उसमें भी मैं हूँ. Because we want it, people should be encouraged to participate, and this is not a money making initiative because we are not interested to earn anything, to be honest from you. अगर 100 भी लोग जुड़ते हैं तो कितना, ऐसा कौन सा बहुत लाखों का टर्नओवर नहीं होने वाला है उसमें. But we want to, whatever money comes in, we would like to invest in the research, because even if to publish a paper, we need to spend money, and that money can be around 5-10,000 rupees per paper. Okay, so we would like to redirect the whatever we are collecting to the research work, so that again in turn the community can be benefited in long run. So that was all from my side. Or I think और किसका शेयरिंग रह गया है? हेलो नितिन जी. हाँ सुयेश जी, कैसे हो, बताइए. यस, बढ़िया. मैंने अभी देखा मैसेज 4:30 बजे, तो तुरंत कनेक्ट हो गया. तो मतलब ये कई सारी टेक्निकल चीजें जो है सीखनी है. मुझे भी ज्यादा कुछ इसके बारे में, डीएमआईटी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग पता है, बस ज्यादा कुछ पता नहीं है उसके बारे में डिटेल. तो सीखने के लिए एक अच्छा फोरम है, तो मैं जरूर कनेक्ट होना चाहूंगा. ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. And those people who would like to join the second batch, they will not be just seeing my face or Nitin sir's face. We will have more trainers coming in. So it's a variety. And we are missing Savan sir. He might Exactly. be occupied and busy somewhere. So he's So not when joined is us. starting second batch? थोड़ा टाइम लगेगा मैम. वी आर ना राइट, थोड़ा सा occupied. We are working on certain things, so maybe a month or so. Before that, we would like to initiate this forum. Okay. And say my way of like, I don't insist people to join trainings because I don't have that approach. Those who feel that this is something valuable which we can get after reading the prospectus or the PDF, the topic and the contents, if people feel that they should enroll, they are welcome. And anyways, this session was not to promote any trainings. I just shared that we have learned a lot of things in the journey of 7-8 months in the diploma. Because उसके बाद ही ये चीजें पता चली कि ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले वाला नॉलेज हमारा खराब था, गलत था. ठीक है, that we accepted कि we were working with that brain, with that belief system, with that knowledge. But अगर हमको कोई नई चीज पता चलती है, then our brain cannot go back on that previous thing, because अब brain को नई चीज पता चल गई है. And जो चीजें हमने एक्सपीरियंस की, would like to share with all people in the forum. हो सकता बिट्स एंड पीसेज में जाए, बिकॉज 2 hours में बहुत सारी चीजें, बिकॉज वी वुड बी टॉकिंग टॉपिक टू टॉपिक. तो जो भी टॉपिक रहेगा उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस या किसी और का एक्सपीरियंस है, दैट विल बी शेयर्ड. एंड दिस जर्नी कैन गो ऑन फॉर years together, because there are so many things to learn from
in the domain of psychology. It is like a vast ocean. And first हमको तो शायद हो सकता है एक आध महीना मिथ्स को ब्रेक करने में चला जाए जिसके ऊपर हमारा DMIT खड़ा किया गया है. That is the thing which I would like to say bluntly कि बहुत सारी गलत चीजें सीख के बैठे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है. Yes. हावर्ड गार्डनर का कोई कनेक्शन नहीं है, बेचारे का नाम घसीटे जा रहे हैं, उसका लेफ्ट राइट सेंटर में यूज किए जा रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोई कनेक्शन नहीं. दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग दिस चैलेंजेस फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी. व्हेन दे थ्रो अस द क्वेश्चंस वी आर क्लूलेस. हमको पता ही नहीं चल रहा है कि इसको कैसे हैंडल करें, राइट? एंड इफ वी गो विद अ साइंटिफिक अप्रोच, पीपल, बिकॉज साइकोलॉजी को साइंस माना जा सकता है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को तो मेजर नहीं किया जा सकता है ना, बट यू कैन अंडरस्टैंड द आउटपुट्स. तो अगर साइकोलॉजी को साइंस माना जा सकता है तो हमारे चीज को क्यों नहीं, बट क्या हमारे अंदर वो जज्बा है कि उस अप्रोच को ले सके, उस पेशेंस, उसको पेशेंटली परस्यू कर सके और एक मुकाम तक पहुंचा सके. हो सकता है हमारे बाद आने वाली जनरेशन उसको और बेहतर तरीके से आगे लेकर जाए, बट कहीं ना कहीं हमको तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. वी कैन नॉट जस्ट से ना कि एवरीथिंग इज बैड, मार्केट में तो लूट मार बची है ना, सॉफ्टवेयर सेल हो रहे, ये हो रहे, तो somebody has to take stand on it. अभी जैसे अगर आप 50 लोगों को पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर होल्ड्स नो वैल्यू इन DMIT सॉफ्टवेयर, you people will percolate this new thought process in the market wherein other people will get benefited and so many people will मतलब वो कटने से, बकरे कटने से बच जाएंगे. And somewhere I don't blame these software selling people also, to be honest, because अगर डिमांड है तो सप्लाई, मार्केट इकोनॉमिक्स का रूल बहुत सिंपल है. If there is demand for something, the supply will definitely appear. अगर डिमांड ही नहीं रहेगा सॉफ्टवेयर का तो फिर बेचने वाला क्यों खड़ा रहेगा कोई. So that is the simple logic we should focus. So सॉफ्टवेयर से हमेशा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है. जैसे जब बहुत पहले जो पुराने सॉफ्टवेयर आते थे, आई थिंक 10 साल पहले की बात है, जब मैंने अपने बेटे की करवाई थी, बड़े बेटे की, किसी से DMIT, तो उसकी रिपोर्ट में उन्होंने मुझे बोल दिया कि ये मैथ्स उसके लिए नहीं है और साइंस उसके लिए नहीं है क्योंकि लॉजिकल ब्रेन पर आर्क पैटर्न आता है. तो उन्होंने 0 काउंट कर लिया उसको वो टाइम पर. और मैंने खैर उसको छोड़ दिया क्योंकि मेरे लाइफ एक्सपीरियंस इतने हैं कि मुझे हर चीज पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है. तो मेरा बेटे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में CA पास किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा CFA पास कर लिया है उसने, तीनों लेवल. राइट. एंड उनकी अभी वो रिपोर्ट मेरे पास है जिसमें लिखा हुआ है कि CA में 1 स्टार है, CA नहीं बन सकता. Dear, hold on. This This is experience ये has चीज to be definitely shared. will take on. This is also a myth about the career we suggest. Exactly. I can challenge all the people who are available in this meeting ना, nobody's career has been in a straight line. पर कम से कम 5 तो ना काम चेंज किए होंगे, मिनिमम 2 बार तो ना शिफ्ट मारा होगा. ऐसा कोई नहीं इस रूम के अंदर फिलहाल. Yes. If you ask me, I have done more than 6 businesses in my 25 years journey. ठीक है, and I'm not मतलब मुझे कोई इसका पछतावा नहीं भाई, मेरा दिमाग ही वैसा है. I always see opportunities in business. Yes. तो अगर कोई मेरा DMIT रिपोर्ट से बताए कि ये ना फार्मास्यूटिकल में ही बिजनेस करेगा तो वो रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा. कोई बताएगा ये सिर्फ इंजीनियरिंग में जाएगा, तो एक्चुअली अभी हमारे हरिप्रसाद जी लॉग आउट कर गए, बट ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन, but he is doing work in psychology. तो करियर को हमको पहले समझना पड़ेगा करियर है क्या चीज है. जो हम सजेस्ट करते हैं वो वाकई में वायबल है क्या नहीं है. आप किसी भी इंसान को करियर नहीं बता सकते हो ऐसा कि आपने यही बनना है, क्योंकि आप जब तक वो अपने करियर में जाता है 10 साल में इंडस्ट्री बहुत सारे डायनेमिक्स बदल चुकी होती है उस करियर के. सर करियर कैसे कोई बता सकता है. When I was in 8th स्टैंडर्ड में ड्राइंग में फेल होती थी, किसी और से ड्राइंग बनवा के पास होती थी, और 10 साल तक आफ्टर मैरिज मेरा करियर था ड्राइंग टीचर को ट्रेन करना. आई वाज अ ट्रेनर. Right. So that is the thing I'm making कि this is the stupidity which DMITians are making in the area of career, to be honest, because कहीं ना कहीं हम बस एक सेलिंग मोड में हैं. चलो हमको सरवाइव भी करना. I do understand those points कि हम बस फिलोसॉफिकल बातों से या फिर ना ज्ञान की बातें करने से पेट नहीं भर सकता, बट is there any solution which can balance it out and in the long run which can benefit the counselor as well as the client, and there is definitely a solution for it.
बिकॉज बिलीव मी, मेरा खुद का अपना सर्वे है कि जितने भी DMIT रिपोर्ट्स हुए होंगे इंडिया में, उसमें से 80% लोग वो करियर नहीं चुनते जो काउंसलर ने कहा है उनको। Exactly. वो वही करते जो उन्होंने तय कर रखा है, उन्होंने सोच रखा है। जो उन्होंने, अब जैसे फॉर एग्जांपल योर केस, भले DMIT रिपोर्ट में ऐसे ये नहीं हो सकता, बट आपका गट फीलिंग था, यू परस्यूड इट, योर किड परस्यूड इट। तो अभी तो अगर हम देखें तो DMIT रिपोर्ट गलत साबित हो गया ना, आपका बच्चा तो सही साबित हो गया। तो I क्या would like to add something. जी मैम। हाँ, अलका जी, जी आप बोल रहे हो आपके बेटे के जो राइट इंडेक्स है तो उसमें आर्च आया है तो 0 उसको वैल्यू दिया है, लेकिन आर्च में इतनी कैपेसिटी होती है तो हम लोग उसको वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वो एक्चुअली वो जीनियस पोटेंशियल है। तो That I बराबर अगर learned नर्चर afterwards. हुआ, जब पहली बार ये था, ये हाँ, तो वो सॉफ्टवेयर जब नया आया था तो ये goof up हो रहा था, वो मैंने वो बाद में इंटरप्रेट सीखा, वो बराबर से मुझे हुआ समझ में नहीं। आया वो चीज। राइट, वो चीज है ना, मतलब जो जिसने इंटरप्रेट किया वो ठीक से इंटरप्रेट नहीं किया। अगर वो ये जब शुरू में आपके इनिशियली बच्चे जब सॉफ्टवेयर आए थे, इनिशियली नए जब सॉफ्टवेयर आए थे तब ये चीज हुई थी, फिर बाद में हमने खुद स्टडी किया, खुद मैम समझा, आज और के बाद भी में पता सॉफ्टवेयर चला। गलती करेंगे, आज के भी सॉफ्टवेयर गलती करेंगे। नोबडी कैन क्लेम, इफ एनीबडी क्लेम दैट देयर सॉफ्टवेयर इज परफेक्ट, दे कैन That's मीट why I am still behind him कि इतनी पढ़ाई कर ली, अभी और करो, now you have potential. So these all are issues which needs to be discussed na, so that people have a clarity about arcs हो या फिर any pattern हो. There are a lot of misbeliefs because हम लोगों ने एक ही एस्पेक्ट से देखा है चीजों को। अब जरा ना हम मजा चखना चाहेंगे काउंटर मीन्स एक साइंटिफिक क्वेश्चन क्या होता है, ये शायद बहुत कम फेस किया रहेगा लोगों ने। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, जो पेरेंट आता है आपके पास, जो इंसान आता है, वो इमोशनल डिसीजन लेके आ रहा है आपके पास असेसमेंट करने के लिए। जिस दिन लॉजिकल बंदा खड़ा हो जाएगा ना, आपकी बाल की खाल निकाल देगा वो, ठीक है। अब यू विल नॉट हैव आंसर्स टू एनीथिंग, ठीक है। हाँ, वी कैन डेफिनेटली हैव दिस ना गेम की इफ्स एंड बट्स लगा के जब हम चलते हैं तो वी ऑलवेज हैव अ सेफ पैसेज टू एग्जिट। ऐसा हो गया तो वैसा, लाइक अब फॉर एग्जांपल जैसे कश्मीरा जी ने बोला कि अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तो फिर माय काउंटर आर्गुमेंट इज दैट कि फिर भी तो हम नहीं नाप पा रहे ना कि वो पोटेंशियल किस डायरेक्शन में जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर हमारा सॉफ्टवेयर फेल हो रहा है या हमारा असेसमेंट फेल हो रहा है कि हाउ वी कैन नॉट एटलीस्ट क्वांटिफाई, एटलीस्ट वी कैन नो द डायरेक्शन ऑफ इट, कि किस जगह पे जाकर, किस डायरेक्शन में जाके इसका एक्सप्लोरेशन बेटर होगा। अगर हम क्लाइंट नर्चर जहाँ हुआ है वहां पे जाएगा। हाँ जी, वो आर्ट नर्चर जहाँ पे हुआ है उस डायरेक्शन में वो आर्ट डिपेंड्स ऑन मेंटोरिंग आल्सो ना, कैसी मेंटोरिंग हुई है बच्चे की। एब्सोल्युटली, कश्मीरा कैसा जी, एक्सपोजर मिला है। कश्मीरा जी, बिलीव मी, you have not met people with arcs who doesn't need mentoring. They are Of course they do need. No, I am one of them. I am one of them. नहीं, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि हम अभी तक ऐसे लोगों से नहीं मिले। Even these was shocking because see, I have experienced the same journey which you have people. मुझे भी ये रट्टा सिखाया गया था कि I met a person with 8 arcs, उसके कोई मेंटोर नहीं है, and a successful person. नहीं, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कुछ जगह पे बेसिक्स हमको अपने अपडेट करने हैं। अगर मेंटोरिंग तो फिर वर्ल्ड्स की भी जरूरी है, लूप्स की भी जरूरी है। तो गुरुकुल ऐसे ही थोड़ी ना चलते थे कि जहाँ पे राजाओं के बेटे भी एज्यूम कि दे मस्ट बी वर्ल्ड डोमिनेंट, उनको भी तो ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है। तो मेंटोरिंग तो हर बंदे को जरूरत है, जैसा देखा जाए, ठीक है। तो दिस डेफिनेटली विल एड्रेस ऑल दिस थिंग एंड वी ऐसी डिबेट्स करने में बड़ा मजा आता है। It's really good, like, you know, even now people are coming out with so many points that I feel very happy. The forum is a really like colorful forum. तो ये बिलीफ तोड़ना टूट जाएंगे तो आई विल फील दैट ना मेरा पर्पस मैट हुआ है, बिकॉज वी नीड टू रिलीज आवरसेल्फ फ्रॉम, बिकॉज Nandama, अब can you mute her? हाँ, चलो देन, तो फोरम का ग्लिम्स अभी मिल गया लोगों को। See how we can have different perspectives. Seriously.
Thanks to me. नहीं नितिन जी, कैसा होता है मालूम है क्या? जैसे हमारा भी जो है रीडर्स का ग्रुप है, तो मैं भी यही बोलती हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए। मैं एक जैसे आपने बोला कि WD मतलब जो भी डबल लूप है सब कंफ्यूज नहीं होते, तो मैंने एक पॉइंट बोला, सामने वाले ने दूसरा पॉइंट बोला। हम 6 जन है अभी, इतने सब मिलेंगे, सब खुद का पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंसेस उनके जो केस स्टडीज है तो वो लोग शेयर करेंगे, तो हमें एक अलग अलग कितने लोगों से नॉलेज भी सीखने को मिलता है। अभी जैसे अलका जी टर्न आउट टू बी अ रिसोर्स फॉर अस, टुमारो कश्मीरा जी माइट टर्न आउट, कल को रेणुका जी रहेंगे, तो I want to connect all these things at one place so that everybody can be benefited. And believe me, nobody is boss and nobody is expert, because I hate that word of being expert. ठीक है? Because अगर मैं मतलब क्या होता है ना कि if there is no space for asking question, then sorry, there is no learning happening, and I don't regard that person as guru. If anybody is not taking up my question, जितना भी stupid question क्यों ना हो, ठीक है? एंड हम अपना नॉलेज किसी पे थोपना भी नहीं चाहते, हम ये जरूर बोलेंगे कि मेरा ये एक्सपीरियंस है एंड आई कैन गिव यू एविडेंसेस फॉर इट। अगर हमारे बीच में किसी चीज पे आर्ग्यूमेंट है, डिसएग्रीमेंट है, तो आइदर यू प्रूव मी सर्टेन थिंग्स विद फैक्ट्स एविडेंस और आई विल प्रोड्यूस सर्टेन थिंग्स। दैट इज द ओनली वे ना टू रीच टू अ कंक्लूजन पॉइंट, राइट? तो डेफिनेटली जैसे मैंने आर्ग्यूमेंट दिया कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ब्रेन, तो कैन दिस बी डिनाइड? तो आप सब किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया ना, तो वी कैन कम अप विद सच ब्रेनस्टॉर्मिंग जहां पर आपका अब सेंटेंसेस बदलना शुरू होंगे व्हेन यू अप्रोच द क्लाइंट, एंड दैट इज द आई थिंक एवरीबॉडीज पर्पस कि हम ग्रो करें, हम मैच्योर हो, हमारा अप्रोच परिपक्व होता चले विद टाइम। वी शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस, बिकॉज nobody has unlimited time, everybody has limited time. I can do max to max 50,000 cases in my lifetime, बट दुनिया का पॉपुलेशन 800 करोड़ है, तो मुझे अगर अलका जी ने 100 भी केसेस किए, दैट विल बी एडिंग इनटू माय नॉलेज, ओके, व्हाटएवर शी इज शेयरिंग। सो दिस इज द थिंग वी आर अप टू, देन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सपोर्ट ऑफ यू ऑल पीपल, सजेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, and any suggestion, any criticism is most welcome, okay? Feedbacks Don't be especially. afraid. Be fearless. Chalo, so anything else anybody would like to add, or shall we wrap up? शायद रेणुका जी कुछ बोलना चाह रही, बड़ी आतुर हो रही है। No sir, no, everything is very well. Chalo, then we will be sharing these details about this forum. And one thing to add, we might take one orientation orientation session in the August month itself. As soon as members join, we'll fix a orientation so that we know each others first, right? सबको एक दूसरे से, अभी क्या है ना कि जरूरी नहीं कि सारे लोग आज का सेशन अटेंड कर पाए, बिकॉज सबका टाइम मैनेजमेंट अलग होता है, कोई एंगेज्ड है, so we will be having new people also, so we'll first understand at a basic level each other, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से belong कर रहा है, and किसका क्या what they are seeking from this forum, so that things can be fixed, and then from the first week of September we'll start sharing the things, start learning, discussing, knowing, and it will be the members who will be defining the course of the things. जो मेजॉरिटी लोग चाहेंगे वही होगा। कौन से डेज रहेंगे और टाइमिंग? वी आर प्रपोजिंग वेडनेसडे, बिकॉज सैटरडे एंड संडे ना हम लोगों का ट्रेनिंग्स का एंगेजमेंट होता है। वी आर हैविंग रिजर्व सैटरडे एंड संडे फॉर डिप्लोमा, जो भी स्टार्ट होएगा नेक्स्ट मंथ या एक आध मंथ के बाद। सो वेडनेसडे वुड बी फाइन आई बिलीव, एंड आफ्टरनून टाइम 4 to 6 इज वर्केबल फॉर एवरीबॉडी। एंड चलो इन केस कोई मिस आउट हो जाता है तो दे कैन रिव्यू द वीडियोस, बट मेरा इनविटेशन सबको ये रहेगा कि प्लीज पार्टिसिपेट। एंड चलो थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरीबॉडी दैट यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम listening to me, to Jasna ma'am, to all of us, and looking forward for a new journey with you all people. Okay? Thank you. Yeah, thank you. Thanks a Yeah, lot. Thanks a lot. Things will be shared in the group. Thank you. Thanks a lot. And Kashmira ji, I will Thank add you, you in the sir. Thank cognitive you. group. Yes. Okay?
Thank you and take Pardon? care. Bye. I will Yeah. add you in our WhatsApp group, Cognitive. Okay. Okay, So okay, that all the updates you will get at one place. okay, okay. Thank you so much. Thank you. Take care. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank sir. you, Jesna. Congratulations to both of you. Thank you. Thank अरे you. Yeah, अनुपमा जी आपने कुछ congratulations. बोला ही नहीं हाँ?